Hello my dear students, today I am going to teach you the lesson agriculture. How many of you have visited a village? Okay, all of you have visited a village. That's pretty good. तो आपने विलेज में जरूर देखा होगा कि वहां पर ज्यादातर लोग एक ही ऑक्यूपेशन में एंगेज रहते हैं, वह है फार्मिंग. For your kind information, I would like to tell you, more than 50% of India's population is engaged in farming. तो इसीलिए ये चैप्टर आपके एग्जाम्स के पर्पस से बहुत जरूरी हो जाता है और इस चैप्टर में आप बहुत कुछ नया और अलग सीखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम गोइंग टू टेल अबाउट टाइप्स ऑफ फार्मिंग. द फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड सेकेंड वन इज कमर्शियल फार्मिंग. सो लेट्स टॉक अबाउट प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है अब कुछ ही हिस्सों में की जाती है इंडिया के. Basically, it is done on a small patch of land and farmers use old methods and technique for farming. They use traditional tools like hoe, dowel and digging sticks for this type of agriculture. And whatever they grow, they keep at home only for survival. They do not sell in the market because the production is quite low in such type of farming. Slash and burn is also associated with this only. Slash and burn आपने पहले भी पढ़ा होगा. You must have studied it in class 7th and class 8. Now I tell you about slash and burn agriculture. Slash and burn में क्या होता है? The farmers used to grow agriculture on a particular field. चूंकि वो एक ही खेती को बार बार रिपीट किया करते थे, तो इसी वजह से जो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है. And that is why at one time the natural fertility of the soil is reduced and they cannot grow more crops. So they are supposed to shift from there. Shift होने के बाद वो दूसरी जगह पर जाते हैं. They clear the patch of land and then they start growing crops over there. And the British people banned slash and burn agriculture because they wanted to rule over a settled population. I would like to tell you one more very important thing. Slash and burn agriculture is also known as झूमिंग, और slash and burn को अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है. For your kind information, in Mexico it is also known as milpa. Now we are going to talk about commercial farming. Commercial farming basically यूपी, पंजाब, हरियाणा में की जाती है. Basically farmers have large patches of land and they grow crops on a large scale. And they use modern tools and techniques. और साथ ही साथ वो HYV सीड्स का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का भी यूज करते हैं. And they also use modern techniques like tractors and other machines. Because they have large fields, I have already told you. And their main motive is to earn maximum profit. और गवर्नमेंट किसानों से ये सब अनाज, चावल वगैरह खरीद लेती है. The agency that purchases wheat and rice from the farmers is FCI. You must have studied about FCI in class 9. FCI stands for Food Corporation of India. अब मैं आपको इससे जुड़ी एक और टर्म के बारे में बताना चाहूंगा, that is plantation. What is plantation, students? Okay, I tell you what is plantation. जब एक बड़े फील्ड में एक ही तरह की खेती को उगाया जाता है रॉज और कॉलम्स में, तो दैट इज नोन एज प्लांटेशन. व्हेन ऑन अ लार्ज फील्ड ओनली वन टाइप ऑफ क्रॉप इज ग्रोन इन रोज एंड कॉलम्स, इट इज नोन एज प्लांटेशन. यू मस्ट हैव सीन इन दार्जिलिंग पीपल यूजुअली ग्रो टी, राइट? एंड इन यूपी पीपल यूजुअली ग्रो ओनली शुगर केन. इन साउथ पीपल ग्रो रबर. These are some of the examples of plantation. The next one is intensive farming. Intensive farming में क्या होता है? Basically, farming पर बहुत ज्यादा pressure होता है because land is less and population is quite high. So this is basically done in areas like Western UP. Because in these types of areas, population is quite high and the pressure on land is also quite high. ऐसा क्यों हुआ? आपको पता है द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड कंटिन्यूअसली, जिसकी वजह से डिवीजन ऑफ लैंड होता गया. नाउ द फार्मर्स हैव स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड,
So they use all sorts of things. They use every input to grow as maximum as possible. They use chemicals, fertilizers, pesticides to grow maximum from their land. Now, I am going to teach you the next topic of this chapter. This is about cropping pattern. हमारे इंडिया में बेसिकली 3 सीजन्स होते हैं. सो किसान जो है हमारे इंडिया के 3 तरह की क्रॉप्स बड़े आराम से उगा सकते हैं. राबी, खारिफ एंड जैद. Rabi crops are basically grown in winter. Basically seeds are sown in October or November and this is harvested in March. While Kharif crops, this is a summer season crop. Seeds are sown in June or July and harvested in October. Rice is the example of Kharif crop and wheat is the example of Rabi crop. Now I am going to talk about Zaid crops. Zaid crop खारिफ और राबी के सीजन के बीच में उगाई जाती है. बेसिकली ये 2 महीने के टाइम में उगाई जाती है. तो ये थे हमारे 3 सीजन्स और 3 तरह के क्रॉप्स के बारे में जो इंडिया में उगाई जाती है. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर एग्रीकल्चर. इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, कमेंट मी एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग विनेज वर्सेटाइल फॉर बेटर स्कोर्स in exams. Best of luck.